You're watching Reality Check. We're at a worrying and strange time in our politics. Anti-Hindu violence is spiraling in Bangladesh, now entering its 7th day, in which there have been at least 17 attacks, at least 6 people killed, as mobs targeted Durga Puja pandals, temples, and Hindu settlements. The trigger was reportedly a blasphemy rumor involving a Quran at a Pujo pandal. Now, the Indian government has praised Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina's promise to hunt down those responsible. BJP leaders like Suvendu Adhikari from West Bengal, which is home to a sizable number of Bangladeshi Hindus considered a BJP vote bank, have asked the government to take steps to curb the violence against minorities in Bangladesh. Hindutva outfits have taken to the streets, like a protest march taken out by the VHP in West Bengal, where again they asked for the Hindu minority in Bangladesh to be saved. So on one hand, the centre/BJP/Hindutva Parivar's deep concern for minorities under threat in our neighbouring countries, but turning a blind eye or even at times stoking anti-minority fury here in India. There have been countless instances of attacks on Muslims just in this past year on charges of hiding their identity, of stealing, of running businesses with the names of Hindu gods. The targets have been vendors or beggars or even Muslim scrap dealers. Muslim religious places too have come under attack, like mosques in Madhya Pradesh. In the towns of Indore and Mandsaur just last year, the flag taken down from the mosque and replaced with a saffron flag. And just in the past 3 to 4 days, there's just been a spurt of bigoted threats and actions against minorities in just one state, in Karnataka. The Bajrang Dal and the VHP entered a church in Hubli in North Karnataka and chanted bhajans inside the church, alleging that the pastor was guilty of forced conversions. A Hindutva extremist outfit took out a march in Gadag, also in North Karnataka. Its leader, Pramod Mutalik, warned that a mosque in Gadag would be demolished to make way for a temple. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ ಹಾಕಿದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಇವತ್ತು ಜಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಆಧಾರ ಸಹಿತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. So violence, threats, and of course rampant bigotry. Today came the news that the retail clothing and lifestyle chain Fab India had to drop an online ad for their Diwali line because it had an Urdu theme. It was called Jasn-e-Riswa, after BJP leaders like Tejasvi Surya and C.T. Ravi, who's the BJP's National General Secretary, led an online campaign calling the Fab India campaign anti-Hindu. Now note that unlike Sheikh Hasina, who'd promised to hunt down those responsible for attacks on minorities in Bangladesh, there's been no such assurance from the government or top BJP leaders here. In fact, Sheikh Hasina appeared to warn India to not react in a way that may threaten Hindus in Bangladesh. All right, let's go across to panel. We're joined by Dilip Ghosh. He's a Lok Sabha MP and he's been the BJP state president in West Bengal. We have with us also Asiful Islam. He's the associate editor of Dhaka Tribune, joining us from Dhaka, and Shoaib Danial, assistant editor, Scroll.in. Let me just start with you, Dilip Ghosh ji, कि ये बताइए कि एक तरफ आप माइनॉरिटीज़ बांग्लादेश में उनके लिए समर्थन में आप चिट्ठी लिख रहे हैं, बीजेपी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वीएचपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब इंडिया में माइनॉरिटीज़ पे कंटिन्यूअसली अटैक होता है, उस पे आप बोलते नहीं हैं. ये कैसा डबल स्टैंडर्ड्स कि आप चाहते हैं कि बाहर के कंट्रीज़ में हमारे माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जब यहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे अटैक होता है. हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी के ऊपर अटैक होता तो माइनॉरिटी हिंदुस्तान छोड़ के चले जाते. आज तो कितने क्रिश्चियन मुसलमान भारत छोड़कर गए हैं. कोई एक घटना हो गया कहीं, कोई एक विशेष जगह को लेके कोई वितर्क है, राम मंदिर का तर्क चला, ये अलग बात है.
लेकिन कोई समुदाय के ऊपर सामूहिक आक्रमण करना, उनका धर्मस्थल को तोड़ना, जलाना, मूर्ति तोड़ना, महिलाओं की बलात्कार करना हमारे यहाँ नहीं होता है। अरे और कहीं एक आध गड़बड़ किया तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। मैंने आपको अभी अभी पिछले कुछ 6-8 महीनों का ये एग्जाम्पल दिया कि किस तरह मुस्लिम मॉस्क पे हमला हुआ, किस तरफ एक लीडर हिंदुत्व नेता कर्नाटक में धमकी दे रहे हैं कि एक और मॉस्क को तोड़ेंगे, किस तरफ मुसलमानों की रोज उन पे हमला, अटैक होता है, पिटाई होता है। इस सब का मैंने इसी साल के अंदर एग्जाम्पल अभी स्क्रीन पे दिखाया। नहीं, मैं आपको 50 साल का एग्जाम्पल दे रहा हूं। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदुओं का ऊपर इतना अत्याचार हुआ, कितना रिएक्शन बंगाल देश में हुआ? कहीं नहीं हुआ। कश्मीर से हिंदू पंडितों को मार के भगाया गया, मानविक व्यवहार हुआ, कितना रिएक्शन हुआ? एक आध जन कोई कर दिया, सरकार उसकी व्यवस्था करती है। लेकिन एक सामूहिक रूप से आक्रमण करना पूरा देश भर में, ऐसा नहीं होता है हमारे देश में। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप 50 साल की बात कर रहे हैं। मेरा पॉइंट अलग है। मैं कह रहा हूं कि आपकी रणनीति एक तरफा क्यों है? आप क्यों सिर्फ बाहर के देशों के माइनॉरिटीज के बारे में बात करते हैं? यहां पे जब माइनॉरिटीज पे अटैक होती है उसके बारे में सरकार या बीजेपी क्यों चुप है? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, कहीं नहीं होता है। एक अखलाक का घटना दिखा करके पूरा हंगामा करते हैं आप लोग, देश भर में एक तरफ हो जाते हैं और सैकड़ों घटनाएं हो जाती है। मैं बांग्लादेश की घटना बोल रहा हूं। पिछले 2013 से आज तक 3679 घटनाएं हुई है। 11 हिंदू की हत्या हुई है। कितने मंदिर, मठ, महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, जला दिया गया है। बंगाल, हिंदुस्तान में कितना हुआ है? यहाँ 18 करोड़ मुसलमान हैं। नहीं, आपका लॉजिक अगर रखें, घटना हुई है। आपने कहा कि माइनॉरिटीज पे अटैक होता है इतना इंडिया में तो वो भाग के सब चले जाते। तो बांग्लादेश में अगर इतना अटैक आप जितना कह रहे हैं तो सारे के सारे वहां के हिंदू यहां आ जाते। आप ही का लॉजिक है। 2.5 करोड़ हिंदू बंगाल में है ना? मैं कह रहा हूं, सुनिए ना। बट आई एम सेइंग आज 1.5 करोड़ सारे के सारे हिंदू आ जाते ना वहां से। 1.5 करोड़ हिंदू हैं, है ना? आज 2.5 करोड़ हिंदू बंगाल में है जो रिफ्यूजी है। वो कहां से आए? उसी का तो परिणाम है। आज भी अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं कि नहीं? लेकिन हिंदुस्तान से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में कितने मुस्लिम गए हमको बताइए आप। एक नाम बोलिए। कोई नहीं गया है। बल्कि ढाका से भाग करके यहां आना पड़ता है वहां के साहित्यकार को, वहां की बुद्धिजीवी को, या तो दूसरे देशों में जाना पड़ता है। आज भी सिख हिंदू अफगानिस्तान से आ रहे हैं। क्यों हो रही है? आप कह रहे हैं यहाँ पे माइनॉरिटीज पे ऐसी कोई 1-2 इंस्टेंसेस हैं, इतना नहीं है। बट शोएब दनियाल, इज दिस अ प्रॉब्लम फॉर द बीजेपी दैट ऑन वन हैंड you have your own domestic political compulsions, anti-minorityism, then when it comes to Bangladesh you have to evince concern for minorities. At the same time you have now the Bangladesh Prime Minister virtually saying to India that listen, don't do anything in your country which may in fact hurt the cause of minorities in Bangladesh. Srinivas, it's actually a fantastic problem for the BJP because it's sort of caught on the horns of a dilemma. Its own personal politics tries to push a sort of brand of pan-Hindutva where it sort of worries about and campaigns on behalf of Hindus in Bangladesh as well as in Pakistan and Afghanistan, the 3 countries listed out in the CAA. But on the other hand, Bangladesh right now is probably India's closest ally on the international stage. So constant demonizing of Bangladesh within Indian domestic politics is certainly having some effect on Sheikh Hasina because she's finding it difficult. She's coming under charges of being a bit too close to India. Bangladesh has always had, I mean, a very close, but also you must remember India is much larger than Bangladesh. You have the big brother, small brother dynamic, which India shares also maybe with. So that is the dilemma. दिलीप घोष जी, यही तो डिलेमा है कि अगर बीजेपी रोज यहाँ बांग्लादेशियों को अटैक करेगा और मुस्लिम्स पे बोलेगा, नेगेटिव टारगेटिंग करेगा, तो शेख हसीना कह रही है आप वहां पे रिएक्शन नहीं होगा क्या? नहीं, कि वहां की रिएक्शन यहाँ क्यों नहीं होती है? फिर इतने लोगों को मार दिए गए, मंदिर मठ तोड़ दिया, आग लगा दिए, महिलाओं पर बलात्कार हुई है, लाखों लोग आ गए, क्यों रिएक्शन नहीं होती है? रिएक्शन नहीं होता है। पूछ रहा हूं कि अगर यहाँ टारगेट किसी देश से बांग्लादेशी तो आपकी पॉलिसी, किसी देश से घुसपैठिया आता है उसका खिलाफ नहीं बोलना चाहिए क्या? बांग्लादेश के जो वहां के चाइना स्वीकार करेगा क्या?
आपका जो यहाँ का पॉलिसी है उसको क्या खतरे में नहीं डाल रहा, जिस तरह से आप रोज अटैक करते हैं? नहीं नहीं, कोई विदेशी आएगा तो बिल्कुल अटैक करेंगे हम। दुनिया में किसी देश में विदेशियों को जाने का अधिकार है क्या? विदेशी नहीं, अमेरिका मैक्सिको को अटैक रहा है कि? अरे इंडियन मुस्लिम्स पे जो रोज अटैक होता कौन है। इंडियन का खिलाफ बोला हमने? कहां अटैक होता है? एक इंडियन का खिलाफ कहीं अलग अटैक किया है किसी ने? ना हम करते हैं ना करने देते हैं। भाजपा ना करने देती है ना करती है। हम यहाँ के लोकतंत्र और संविधान को मानते हैं। अच्छा, आसिफुल इस्लाम, टेल अस हाउ इज दिस प्लेइंग आउट इन Bangladesh, because it almost seems like you have this competing communalisms on both sides of the border, and is there in a sense that implied kind of message in what Sheikh Hasina is saying to India that look, if you ratchet up the rhetoric and the sort of the sectarian noise on one side of the border, it may have repercussions on the other side? Well, I think it's important to note the Prime Minister has basically said something which is, number one, extremely good sense. It's a very sensible thing to say, because we do have a shared border and we do have a shared history of a kind where, you know, what happens in India is something which is followed in Bangladesh, and what happens in Bangladesh is clearly followed in India. But I think the concern is, and in some ways, I think Bangladesh again has taken the lead in our region. Right. Because we're not shying away from the fact that there are issues and that there must be greater action. The Prime Minister and everybody from the top down, I mean, just recently we've had street processions in universities, in a major square in Dhaka. Both the major political parties, the Awami League and the BNP, have come out and they've repudiated this kind of religious and communal baiting. It's something that the Bangladeshi state, the republic, simply doesn't agree with. And that's something that goes back to the very beginnings of our history. We have always been about fair play and justice. And I'm happy to say that everybody is holding that line and saying, no, this is something we don't accept. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक सवाल था मेरा दिलीप घोष जी कि जिस तरह से हमने देखा कि वहाँ पे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा कि जो भी ये कर रहा है अटैक्स हिंदूज पे, हम उनको हंट डाउन करेंगे, हम उनको लेकिन ढूंढेंगे और उनको टारगेट करेंगे। मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर हमारी जो देश की नेतृत्व है, प्रधानमंत्री, वो जब यहाँ पे माइनॉरिटीज पे अटैक हो, ऐसा क्यों नहीं बोलते कि जो करेंगे, जो कर रहा है ऐसे हम उनको हंट डाउन करेंगे? प्रधानमंत्री जी दोषियों को सजा देते हैं, ढूंढ के निकालते हैं, चाहे किसी भी जगह हो। कोई कानून में हाथ लेता है तो उसको छुट्टी नहीं है। आज वहां के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, स्टेटमेंट 7 दिन तक दे रहे हैं, और आज भी नहीं, यहाँ कहाँ एक्शन हो रहा है? व्यवस्थित होनी चाहिए ना। यहाँ पे कहाँ एक्शन हो रहा है? मैंने अभी आपको 2-3 उदाहरण दिखाए हैं, जैसे मैंने दिखाया है कि भाजपा किसको छोड़ दिया गया। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, किसको अभी का हाल का बता रहा हूँ आपको कि भाजपा का प्रदेश है, भाजपा की सरकार है कर्नाटक में। ऐसा थोड़ी ना। नहीं, मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूं, आप सुन तो लीजिए। उसको वीडियो भी दिखाते हैं कि संघ परिवार के लोग आके एक चर्च के अंदर, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, आपने पूछा किसको छोड़ दिया, मैं आपको बता रहा हूं। एक चर्च के अंदर कर्नाटक में आके उन्होंने वहां पर बाकायदा भजन मंडली किया, एक चर्च के अंदर घुस के। उन पे कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। अभी एक हिंदुत्व के नेता हैं, उन्होंने धमकी दिया कर्नाटक में कि हम एक मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाएंगे, उन पे एक्शन हुआ? नहीं हुआ। अभी आपके कुछ एमपी लोग हैं जो सुनिए एक कैंपेन चला रहे हैं फैब इंडिया के खिलाफ कि ये कम्युनल है, उन पे एक्शन हुआ? नहीं हुआ। यही तो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल। तो एक्शन नहीं होता है। दीजिए, और उसका एफआईआर होता है, केस होती है, नहीं हुआ। कोई एक सरकार नहीं किया, अलग बात है। नहीं हुआ अभी तो नहीं तो कल होगा। बांग्लादेश में 7 दिन से चल रहा है इतना बड़ा हिंसा, अब प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वहां सुरक्षा दें, हिंदू निश्चिंत होकर रहे, क्योंकि हजारों साल से वहां रह रहे हैं। बांग्लादेश के आजादी के लिए, वहां की तरक्की के लिए उन लोगों का योगदान रहा है, उनका पूर्वज सेवा किया, मुक्ति युद्ध में उनका योगदान रहा है। आज उनका अत्याचार हो रहा है। के लिए है वो इंडियन माइनॉरिटीज, जो ये तो दे आर नॉट इवन इंडियन सिटीजंस। बट चलिए, आई आल्सो स्पोक अर्लियर, अच्छा मैं आता हूं, ज्यादा सुरक्षित है देश में। अच्छा ठीक है, यहाँ के माइनॉरिटी दुनिया में किसी देश से भी ज्यादा सुरक्षित है, ये वो भी मानते हैं। इसलिए इतना बोलते हैं कि प्रेशर है, भय है, लेकिन कोई छोड़कर नहीं जाता है। बट एनीवे,
I spoke earlier to Hassan ul Haq Inu, who is the former INB Minister of Bangladesh, and I began by asking him about how exactly worrying is the situation that the violence is going on despite Sheikh Hasina's assurances. Let me assure you one thing. In Bangladesh this time, 32,000 plus puja mandaps were there. In 32,000 plus puja mandaps, the government of the day with the administration successfully held the puja festivals, and the Hindus and the Muslims both participated in the puja mandaps in a festive mood. Only in 50 cases in mandir or mandap, 50 incidents happened where the zealots and the fundamentalist terrorist network tried to attack suddenly. So let me assure you, they tried to provoke a riot, a religious riot. But that has been averted because we see that the Muslim community and the Hindu communities are living in harmony, and there is no tension within the community. Okay, so you're saying it's only limited, it's not as widespread as it may appear, but you yourself have been visiting some of these areas where Hindus have been targeted. What are you seeing and hearing? Well, 2 days back in northern Bangladesh, in Rangpur district, there is a place called Pirganj. In that place, two areas, localities where the minorities live, have been vandalized, and some houses have been burned down. According to the estimates, 270 people are becoming homeless. As such, I have visited that place 2 hours back, and no casualty, physical casualty. No physical casualty, but houses are burned down and looting was there. So the cattle was looted, the ornaments has been looted, and the other valuables are looted. So at the moment it is under control, and after within hours, the local police headed by Biplab Sarkar, the subordinate police, they successfully caught certain persons who were involved in the looting and vandalizing and burning down the houses. So things are under control. That is the position. But I just wanted to ask you about Sheikh Hasina's comments, where she said that India shouldn't do anything which will worsen the situation for the minority communities in Bangladesh. What exactly was she referring to? Was she basically suggesting that the government, the policy, the political party here in power is sort of anti-minority here, and that is having a repercussion there? Well, the majority people in one country is minority in another country, and we're having a long border. So anything happens in India has a rippling effect in Bangladesh, and anything happens in Bangladesh has a rippling effect in Bangladesh. Muslims are majority and Muslims are minority. Hindus are majority in India, minority in Bangladesh. So here we who are in politics and run the government, we need to be very careful, and we need not politicize a stray incident. That is our request. I think our Prime Minister, Honorable Sheikh Hasina, is a cautious statement. Just so that we are managing it, we are handling our situation. We hope the Indian government will understand our limitations and delicacies. All right, okay, situations and delicacies. Thank you very much indeed for that. So, just to come back to you, Asiful Islam, so I think that was a slightly cautious way that the minister or the ex-minister was trying to put across what Sheikh Hasina was saying. But overall, you feel that this is a cycle of violence which will now start to play itself out, or is this something which may continue? Okay, well, if I may say 3 things. First of all, I just want to say that so far 450 people have been arrested in 71 cases. Okay. Now, it is true that if you look at the map, you'll find that it seems geographically quite dispersed. Okay. But if you actually look at the violence,
you will find that, in fact, the violence is quite localized in those localities. Right. The idea obviously seems to be, for the miscreants who tried to pull this off, was to get sort of a public take. But that sentiment simply didn't exist, and so nobody took. In fact, the opposite has happened. People have stood against it. The public is saying this is wrong, and this is not the Bangladesh. This is not our Bangladesh. The other thing that I wanted to say is that the death toll now, I mean, the latest I have, it's 6, perhaps 7. I can't be exactly sure at the moment. Okay. Of which two are Hindus, and 5 are Muslims who have died in the course of clashes, etc. So there has been a lot of damage to property, and a lot of religious places have been vandalized, and that's absolutely tragic and unacceptable. Right. But as the ex-minister pointed out, the actual death toll has been quite low. Okay. And that's a good sign. Right. Shoaib, I'll just come to you in a second. Dilip Ghosh ji has to Dilip Ghosh ji को कहीं निकलना है, तो हमने उनको काफ़ी लेट तक रख लिया है. तो दिलीप घोष जी, ये जो बता रहे हैं, मंत्री जी ने भी कहा कि काफ़ी हद तक एक्शन ले रही है बांग्लादेशी सरकार. कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया है, कई सारे जो मंडप्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं. 32,000 मंडप्स हैं टोटल, उनमें से 50 इंसिडेंट्स हुए हैं. तो इसको क्या आप मानेंगे कि यही मैं कह रहा था कि बांग्लादेश गवर्नमेंट जब माइनॉरिटीज पे अटैक हो रही है तो काफी स्ट्रांगली उस पे एक्शन ले रही है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता. देखिए, पहली बात तो 30,000 हो और 40,000 हो, 50 पंडाल जला देना कोई कम नहीं है. दूसरा, क्यों बार बार ऐसा होता है? मैंने आपको पिछले 8 साल का बोला, 3,679 ऐसा हिंसा घटना और मृत्यु तक हुई है. हमें हमारे मित्र देश है और हसीना सरकार के ऊपर भरोसा भी है हमारा, क्योंकि इसके पहले जो घटना हुई थी उन्होंने 8,000 लोगों को अरेस्ट किया था. इसके पहले कोई नहीं किया, इसलिए उम्मीद है, तभी हम डिमांड. और वहां नहीं, हमारे देश में भी किसी प्रदेश में ऐसा घटना होता तो हम उसका निंदा करते और प्रतिवाद करते, क्योंकि मानवता पर आक्रमण है और इसलिए जल्दी होनी चाहिए और लोग वहां निश्चिंत होकर रह सके. मेरा पॉइंट ठीक है, माय पॉइंट वाज व्हाई नॉट हियर. आई थिंक दैट्स द क्वेश्चन, शोएब, which despite my persistent attempts Dilip Ghosh has not answered, that this complete, almost lopsided, asymmetrical, belief in minority rights when it comes to minorities outside India but not here. Yeah, I think that's really the sort of irony that I think for the last few days we've spoken more on minority rights in India, in Bangladesh, than actually in India. And it really shows how precarious the communal situation is in India as well, and the sort of interplay between majoritarian forces in India and Bangladesh, which sort of feed off each other. So anytime there are attacks on Muslims in India, there are majoritarian forces in Bangladesh which use that for their own propaganda, and we can see that happening here, vice versa, right, where attacks on Hindus are being used to sort of further marginalize Muslims in India. Okay. Which are completely unrelated. So that's a worrying cycle, but we do hope it will come to an end, and let's see how it plays out. But thank you all so much for joining us. Thank you very much, Dilip Ghosh ji. बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े. We're completely out of time. Thanks for watching. Good night.